अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आदिल याकूब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अदनान सदीक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिट रिएक्शन। तो आज अदनान भाई जो वीडियो हम लेके आए, अच्छा, क्या ख्याल है आपका, कौन सी वीडियो होगी? आई थिंक श्रीलंका पे होगी। श्रीलंका भाई ऑफ कोर्स, और श्रीलंका की बहुत ही ज़बरदस्त ये शहर है, तो जिनको हम लोग आगे आज एक्सप्लोर करने लगे। लेकिन ये वीडियो मैंने नहीं देखी। अच्छा। पता नहीं आपने देखी है? नहीं, मैंने भी नहीं आई थिंक देखी होगी। जैसी नाथ के इस तरह कुछ नाम था उनका। यार नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट है, हमसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, हमसे वो बोलने नहीं होते आप लोगों के नाम, और दूसरा हम भूल भी जाते हैं। तो जैसी नाथ अलबत्ता उनका नाम था, आगे आई दोनों के आता था नाम के। तो उन्होंने ये वीडियो हमें रिकमेंड की थी, और अभी नहीं की थी, काफ़ी टाइम से की थी, लेकिन वो मतलब कॉन्टीन्यूस के में ये वीडियो रिकमेंड कर रहे थे। तो मैंने सोचा चले अब देख लेते हैं यार इस वीडियो में है क्या ऐसा। तो इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, और व्यूवर्स आप लोग भी हमारे साथ, कि जो एरियल व्यूज़ हैं इस सिटी के और इनके, और क्या क्या आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, ये चीज़ें होंगी श्रीलंका की। और सब्सक्राइबर यार हमारे बहुत कम है श्रीलंका से, तो श्रीलंका वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि आप लोगों के श्रीलंका के सब्सक्राइबर्स हमारे पास बहुत कम है। बाकी इंडिया और बांग्लादेश से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। तो मूव करेंगे अपनी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं कि क्या हमें दिखता है इसमें। अच्छा जी। Sri Lanka is an island country in Southeast Asia which has maritime borders with India to the northwest and the Maldives to the southwest. The country's documented history spans 3,000 years with evidence of prehistoric human settlements dating back to at least 125,000 years. From the beginning of British colonial rule, it was known as Ceylon until 1972. After a 30-year-long civil war which ended in 2009, the diverse country is now opening up more and more for tourism. The goal of this series is to give you an introduction to the country and the neighboring Maldives, starting with Sri Lanka's tea region, temples, and the rock fortress of Sigiriya in this episode. Welcome to the Tropical Escape. Welcome from Sri Lanka. We're in a tuk-tuk. We're in a tuk-tuk right now, on the way to the train station, where we start our tour. Die liegt relativ zentral in Sri Lanka, genauso in der Mitte der Insel am Fluss Mahaveli. Und was man hier machen kann, das seht ihr schon hinter mir, hier sind überall Vögel unterwegs und man kann hier ganz besonders gut Vögel beobachten gehen. Die zweite wichtige Sehenswürdigkeit, die man sich hier angucken sollte, ist der Buddha-Tooth-Tempel. Kandy was the last capital of the ancient kings era of Sri Lanka. The Temple of the Tooth Relic is one of the most sacred places of worship in the Buddhist world. It is located in the royal palace complex of the former kingdom of Kandy, which houses the relic of the tooth of the Buddha. Sri Lanka's beautiful tea region is located just around the corner. This is also where you can take the most scenic train ride in the country, from Kandy to Ella. Make sure to visit also one of the tea factories to learn more about the popular Ceylon tea. But our next stop is located in north-central Sri Lanka, close to the town of Dambulla. Here, a column of rock, nearly 200 meters high, was selected by King Kasyapa between 477 and 495 AD for his new capital. He built his palace on the top of this rock, decorated its sides with colorful frescoes, and surrounded it with beautiful tropical gardens with extensive water features. On a small plateau about halfway up the side of this rock, he built a gateway in the form of an enormous lion.
The name of the rock fortress is derived from the structure Sigiriya, the Lion Rock. The capital and the royal palace was abandoned after the king's death. One of the best ways to get an idea of the scale of the site is to take a scenic flight around the rock. Totally recommendable. Next up is the nearby Kaudulla National Park, which is a great place to spot birds, but also big groups of elephants in the wild. यहाँ पे तो देखो जैसे आम भैंसें होती हैं पाकिस्तान में वैसे एलिफेंट्स हैं कितने ज़्यादा एलिफेंट्स हैं ये इनका नेशनल पार्क है. Our last stop in the north-central province of Sri Lanka is the ancient city of Polonnaruwa, which has been declared a UNESCO World Heritage Site in 1982. Polonnaruwa was the second capital of Sri Lanka after the destruction of Anuradhapura in 993. It comprises, besides the Brahmanic monuments built by the Cholas, the monumental ruins of the fabulous garden city created in the 12th century. In the next episode from Sri Lanka, we'll show you some of the most beautiful beaches, try the local food, and say hi to leopards in the Yala National Park. So, make sure to subscribe and check out the related guide on my blog if you want to visit Sri Lanka as well. Thanks for watching! We have 4 emergency exits available if in case of an emergency. I shout, jump, and you jump. Just kidding. ओके जी वी हैव एंडेड द वीडियो. अच्छा मुझे तो ये बहुत अच्छी वीडियो लगी है, इसीलिए चलो शुक्र है हमने इसी पे रिएक्शन किया है. और यार इस तरह की वीडियोस हमें रिकमेंड किया करें जो हमें भी अच्छी लगी. आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. इसके एक तो हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्कुल जो मुझे नहीं पता थी कि श्रीलंका की क्या है. अच्छा वहाँ पे जो बुत वगैरह इनके वो भी दीवार के ऊपर जो है वो आर्किटेक्चर वो बहुत ही एंटिक टाइम की हुई है. बिल्कुल बिल्कुल. तो बाकी इसके जो एरियल व्यूज था बहुत औसम. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. हमें श्रीलंका से भी सपोर्ट अभी चाहिए बहुत कम है चाहिए. और दूसरी बात ये है कि मुझे तो ग्रीनरी आप लोगों की बहुत अच्छी लगी. ऐसी वीडियोस और हमें रिकमेंड किया करें और कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस वॉच किया करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.